So guys, kindly open the working folder or we'll start the session. I'm making a different folder for this day 2 and a new Jupyter notebook. So I'll just write day 2. So today we will be going to continue where we left. Basically slicing, indexing, functions, if else statements, loops, while loop, for loop, ये सारा आज हम cover करेंगे. And then next weekend we will be focusing on class and oops statements, and उस पे हमने थोड़ा सा जोर देना है. उस पे we have to work on it, object oriented programming, and after that we will be completed with basic Python, and then we will be working with some applications of physics. Okay, so basically by the end of next week you will be having a good hand on Python, and then you have to do some practices of applications in physics basically to grill up all the things. वो हम basic सा कर लेंगे next week तक, and then we will be focusing on libraries like Panda, NumPy, Matplotlib, and a little touch to astronomy also, so that you can get an idea how the data analysis work, and alongside that we will be working with the physics stuff. So today basically we will be first of all doing slicing and indexing. एक minute. So let me show you where we ended last day. So these were the two files. So we ended at input and output functions. Okay, so yeah, so we will be continuing after that. So no, I'm not following any kind of structure from YouTube or something. I'm just following my notes. So maybe if you are also referring some YouTube videos, maybe we may get not aligned properly. Okay, so basically we will be doing list first of all, then slicing, of course, slicing of the list, and indexing. So basically list से हमें क्या पता चलता है? List, anyone? uh, so basically list is something that contain any type of values, maybe string, input, integer, float, anything. So first of all we will be creating a list, a normal list. तो उसमें हम क्या करेंगे, एक planets की list बनाते हैं. So wait a second, planets, we will name it as like this, planet is equal to, क्योंकि एक तरह का variable ही होगा. And then for giving some values in the list we have to make a square bracket, and inside that you have to just give it like Mercury. Okay, because Mercury is a word, is a string, so you have to mark with the inverted commas. Then maybe like Venus, then Earth. You can also add up some integer values like something like this, anything. And these are like float values. Every float is a integer, but not every integer is a float. Okay, so secondly we can add something like this. It can be anything, it can contain any type of data type. Okay, a list can contain any data type. So if I will just, basically indexing is something giving a rank to something. Like if someone has ranked 1, it may it is a unique number to that particular value. No one will be ranked that same value. For example, I'll just show you. So
planet bracket 0. If I'll do that, it will give the value on the 0 index. Index is basically the numbering. So in Python, how the indexing start? It starts from 0, 1, 2, 3, 4. So basically it is a 0 index, it is a first index, it is a second index, it is a third index, and it is a fourth index. Never start it from here, like 1, 2, 3, 4. It start always from 0. Okay, so like um, so indexing starts from 0, then 0, 1, 2, 3, 4 and so on. Okay, अगर मैंने टाइप किया अब यहाँ पे 1, so what do you think, what will be printed? Anyone? Anyone? My voice is audible, right? My voice is audible, right? So it will be Venus. You can speak out. So it will be Venus. So these are the things. But there is also one more catch. We can index something in negative number also. It may be like -1, -2, -3, -4. It starts from backside. It's like if I'll type here -1, so it will be printing true. The the place value on the index -1. So it doesn't start from like -0, because 0 and -0 is same. So it will start from -1. -1 is the last value, then -2, -3, -4, -5. So in this case -5 and 0 will give the same answer. So if I'll just type here -5, okay, so it will be giving the Mercury as well, same as 0, because if we start from here it is 0 index. If we start from back side, it's -5, -1, -2, -3. So indexing from back side is start from -1, -2, -3 and so on. Okay, then there is something, we have to slice things. This is all about indexing. This is the basic thing you should know, because in the data structures, when we have some data of astronomy, physics, something, we have to know how to slice, how to index, how to separate a different part from that data, how to index that data, how to get specific data from that. For example, in the case of astronomy, there are FITS file. FITS file are the structure file which have different tables in it. Each table have different type of data, and different table is marked as different index. It starts from 0, 1, 2, 3, and so we if we need some like image data of that object in the space, we will be studying only the 0 index data, the table present on the 0 index. If we are working with the spectral data, we will be working with the first index. It's not specific in all cases, because there are some cases जिनका spectrum data जो spectral data होता है वो अलग से ही होता है. So it's just a kind of basic FITS file, the standard FITS file. Okay, so that's the example where the indexing works. So it's a useful thing. Now we'll come with the slicing part. So I'll just type here slicing. There is a rule of slicing. So what I'll do is, so there is a rule which says start, stop, and then skip. Okay, so you have to remember this out. Okay, so for slicing you need to remember this code: SSS, start, stop, skip. So we will be giving some numbers here. Okay, like starting number, where to start it from, where to stop, and how many values to skip. Okay, I'll just show you. It will give you some better understanding. So for example, planet is equals to, starting from 0,
up to third value, and don't skip anything. So it will be printing the value on the 0 itself, then 1 and 2. It will not be printing the value on third index. So it will be, it's like start and print the first value and stop before the last value mentioned and skip nothing. So if I just go with like this, uh, like this, it will be printing the same value, because not, if we mention here nothing, it consider it as 0. Okay, so that's the case. और ये हमारी स्लाइसिंग होगी. अब इसको थोड़ा सा हम और इसकी देखते हैं चीज़ें. So we have like one more thing here, planets, then start from 0 till the end and skip two values. So what it's doing, it's starting from Mercury, it's skipping the second value, it's considering Mercury as 1, then second value, skipping Earth as the first value, then skipping the second value and printing the rest one. So it's like start to end सारी वैल्यूज लेनी है हमने, बट जो दूसरे नंबर पे वैल्यू आएगी उसको हमने गायब कर देना है. सो इट्स प्रिंटिंग द लिस्ट काइंड ऑफ दिस. ठीक है. उसके बाद हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है. सो दीज आर ऑल द थिंग्स यू नीड टू कीप इन माइंड. ऐसे स्लाइसिंग करनी होती है कभी कभार हमें. The second thing is कि you can also test it with the backward counting like -1 -3 वाला. So we'll test and see what are the results for that also. Like I'll go with start from -1 up to -5. So now it should not print like the Mercury stuff. I don't know the answer, of course, and don't skip anything. So so it's not printing anything. Can anyone has solution for this, why it's not printing anything? Anyone want to say why it's not printing anything? Otherwise I'll tell. Anyone in the chat? Why it's not printing anything when I just started from -1 to -5? Why it's not printing anything? And now it's printing everything. So यहाँ से थोड़ा सा एनालॉजी, थोड़ा सा तो पता चल गया होगा कि वेट अ सेकेंड, कि when I did from -1 to -5 it's not printing anything. When I did -5 to -1 it printed all values except the last one. So okay, so no one is answering, I'll just tell you out. The slicing work in the forward direction only. Okay, so it consider -1 as the first value, uh, kind of first value, not like that. So it's not like getting an idea what to print. So basically it will be going in the forward direction always. Like it will be considering -5 as a zero value, which is actually it is, and then we'll be going forward till the end index. And if I'll just do it like, that's the wrong stuff, you can't enter it like this. Skipping -1 is nothing. Okay, so it's now working. So it's skipping the second value, same as what was printed here. Just हमने उसको, if I'll just stop it here, 1 2 0 1 2 3 4. So I'll just stop it at 4, so it will be same as these things. Okay, so if you have any query right now, do tell me. Otherwise we are end up with these things. We will be focusing more on like detail of slicing now, how to slice a word also. Okay, so it's like, it was like slicing a list. Now we will be slicing a element of the list. Okay, so if you have any doubt till now, you can just ask me. So actually the thing is, Python without application is nothing, understandable. Until we will go with the application stuff, you will be getting a better understanding where these things are used.
So you need to wait till the next week. So for the next lectures we will be adding some applications in it, so that will be more engaging. Right now you need to know these things as it is. So these are actually the kind of rules, but some kind of logical rules also, so you need to keep this in mind. So I assume there is no doubt till now. So we'll start working with like slicing something, a particular value of from the list. We'll define a new variable which is only the first element of the list. So what I did was I defined a variable which is equals to the value on the first zero index of the list, which is named as planets. So what I did that, if I'll just print this out, so it will be printing Mercury. Okay, so if I'll just do any another number from here, if I'll just do any another number here, it will be printing Venus. Okay, so that's it. So now if I'll just make slicing on quit tree, जो भी लिखा है मैंने, QWERTY जो भी है, I don't know how to pronounce this, but it look cool. ठीक है, it look cool. So अब हमने इसकी slicing करनी है. So what we'll do, I'll just did something random, start from 0, like start from 0 till the end, skip 2 values. So it will be printing VNS. So basically starting from the first value, skipping the next value, starting then printing the next value, skipping the next value, then printing the last value. If I'll just do that, it will be doing nothing. Okay, so if I will do that, it will be printing the same. If I do that, it will be going like starting, then skip 2 values, then print, and then skipping 2 next values. So these are like this. Okay, like skipping 2 values. Okay, so these are the things, these are basically the whole things we need to know. एक बारी चेक कर लेता हूँ if recording is working properly. So yeah, it's working. Now it's time for the loops part. Till here slicing and indexing, it's clear or not? Just tell me. Is it clear, guys? I just need a response, a little bit, just yes or no. Is it clear, or I'll just explain it again if you have any query. So yeah, it's clear. So okay. Basically, there are more things from instead apart from the list, like tuples, dictionaries. Uh, that is not that important in our astronomy and physics. Yeah, they are important. Like dictionary is important, so we will be discussing that. But tuple is a kind of list which can't be editable. We can't edit a tuple, but we can edit a list. Okay, so we can change a list. There are some features like append feature. So before going to loops, I'll just continue with that also. I just, oh wait a second, I just get it in my mind. So we will be working with some features of list, and then we will be skipping to dictionary. Okay, just a second, guys.
So we'll be doing editing and appending list or extending something like that. Okay, so working with list, you can say. So I'll just create a list, a simple list, a new list, which is 1 2 3. Okay. uh, what I'll do is I'll write a very small word, append. Append is basically, wait a second, guys, there is a glitch here. Okay, so I'll just using the word append, and then I will write anything like 11. So then I will be printing again the list. So what it did is it just gave a new list which have the number 11. If I'll just write here some string which is true, of course it's not a boolean now because it's a string in inverted commas. So it will be printing a string with these inverted commas. But if I will just like go with this also, it will be giving a boolean value. Okay, so these are the things. Maybe we can try this out. I have never tried this. So exactly one argument. So at a time for append thing, you have to give exactly one argument in the bracket. So you can't do it like this. But yeah, for multiple elements there is something called extend. So we will be doing lst extend, and then under a close brackets, the square brackets, we will be writing some matrix. Matrix can be anything, maybe a column or row matrix or 2 by 2 matrix, which can contain some values. So right now list is just a like row matrix. List is a row matrix, right? So list is a row matrix, so we are only allowed to add row elements. So if I just go with like this and then printing list, it will be giving me a new list which have already that 11 value. It has updated the list, and then again it is updating a list with some more values. If I just add like number of values, okay, so it's giving that again. So there are some more values. uh, there is something very interesting, like you want to insert something in the list, okay, at specific position. How would you do that? Okay, so there is a function dot insert, then like 3 and 9. So I'll just print the list. So what it did that, uh, after third element it will be printing the element we want. Okay, maybe I can try this out. So it's printing this also. uh, okay, so it's considering this as a whole number. Okay, so we'll not do that. We'll just go with like my name. So after third value, basically what it's doing is it's first first element or first entry is the position, and second is the element we want to add. Okay, so it's like that. If I'll just do it like 0, so it will be coming in starting, okay, at the 0 index. So basically if we are giving the first entry is the position, basically the index, and the second thing is the where to add it. Okay, so if I'll just go with the first one, it will be giving the same value at the first index. Okay, so that's the thing. That's all about that. So there are some more things also. Delete and removing something. um there is a very minor difference between a delete function in list and a remove function in list. So remove basically work for a specific value, where we want to remove a specific value, we have to give it the name of that specific value,
And delete works for like a index up. We have to give it a index value, basically the position of the element, and it will be deleting the element on that position. So how it will work is, also uh, rather doing these insert thing, you can just go with like lst 0 is equals to 10, and then print lst, so it will be replacing that value. Okay, so for delete function you have to write del in list, then the index value. For example, I want to delete this, and now I'll be just printing the list again, so it will be deleting that 0 index value. But if I want to remove this 10, okay, so I want to remove this value which is present here, so what I will be doing is remove. So these are not the very silly functions, you have to keep it in mind, because when we have a CSV data, when we are working with some arrays, so we make use of these things. Okay, when we want to just clear whole n values which are like zero values, so you have to keep in mind how to like do that. So it just removed the 10 value, the value which was valued as 10. So for example, I just add something like okay, so I'll just add something like this, so I will be removing that. Okay, so okay, so I just remove that, and so it will also removing anything from any data type. So I just wanted you to show that if I just make it a boolean value, it will be replacing that position with the boolean value. It will be this function will be removing. I'll just write it like that, will remove, will delete value on index 0. Okay, replace value on index 1. Okay, so remove value named true. Okay, so these are the functions. Then we have, I'll just explain you guys, there is something called concatenation, a very big word, concatenation. So I'll show you how it works. There is something called tuples. So that was the end of the these things, list वगैरह, and now we'll be working with tuples. Tuple के लो, tuple के लो, जैसे भी, that's depending on you guys. So I'll just name it as like tup. It's written in these format 1 2 3 with the these brackets, normal brackets, close brackets. Okay, so if I'll just do it like this, um, dot append, so tuple has no attribute append, so we can't do it like this, but there is an option. We can add a tuple into a tuple, okay, to make a new tuple. Okay, so if I just write now tup, it will make it like this. But there is one more thing, we can't like, I guess, remove the tuple. Okay, so I'll just show you some examples, you will get a better understanding. So there are some more kind of things to insert a value in the middle. How I'll do that, so it will be like tup is equals to, it's like the second value, it's actually the, you can say, the first index. It's 0, then 1, and before 2, don't consider the value on the 2. Okay, plus
a new tuple. I'll just explain you with the result, okay? Then go on. And before, you have to specify the position, exact position like this. So if I just go with like here, like tuple, what it will be doing is, wait a second, there is some issue. Wait a second. It must not be like so many values. Yeah. So I just actually ran it twice, I guess that way. So what it is doing is, this is basically the first index. If I do like that, it will be not doing it like this, okay? So we can't index it like this, we have to index it like in this format. So starting from 0 index before the second index, basically it is considering it as first index, okay? Index 1. सो इंडेक्स वन पे वैल्यू डालनी है. अब ये क्या है कि जितनी बार आप रन करोगे ना उतनी बार ये वैल्यू उस पर डालता रहेगा. सो इट्स लाइक नॉट लाइक अ लिस्ट, ओके? सो even if I guess you go with this stuff, it will not be adding again and again, but this happens here. So this things is called concatenation, okay? Adding like this, okay? So you can add a tuple into tuple, okay? So how to edit a tuple? If I just want to remove some elements, then how would I do that? Any idea, any clever thing that we can do, anything that is in your mind that we can do? Enter, add the entry as many time as you run the same code for tuple, okay? So I just ran again, it's just adding more values. So any comments on how to edit a tuple, like how to like append like more easily? So yeah, anyone speaking? Okay, so I'll just continue. uh, so for example, we have this tuple here. I'll just copy and write it here with some 4 values. What I will do is something clever thing. I will just convert this tuple into list first. So list will be is equals to, there is something called list, and it will convert a tuple into a list. It will convert a tuple into list. So it will be like list dot append. Now now lst is a list which contain the values of the tuple, okay? So now if I'll just do it like this, append to 5. So oh, so it will be like, it will be appending then 5, and I will be entering a new tuple which will be a list, and then print that tuple. So it will be printing 1 2 3 4 5. What I did is initial tuple, then converting that tuple into list, okay, via this method, list bracket tuple, make make that tuple a list, then appending a list and naming, oh yeah, converting into list and naming it as lst, okay? Then appending that list which was named as lst, then reconverting that list into a tuple via this method, and then printing it like that, okay? So that's how it works. So now what is happening if I just do it like that? Yeah. So now it's happening is, it's just a different method to append a tuple. Rather we use this concatenation. So both things work, but now the thing is, you can add some more operations here, like list dot remove second value, and then it will be removing that value.
but you can do it like this. You can't like do it like tup dot remove one. So we will be giving the error because there is no function. We can't edit a tuple. Okay, so this is how it works. So I guess the tuple is also clear to you guys. But more often we work with the list stuff, not with the tuple stuff in astronomy or astrophysics, जो भी है physics भी. Okay. So now there is something called dictionary. Dictionary is the thing when we are working with the CSV file, when we are creating some own CSV data. So we create list or dictionary. Dict. So I'll just name it like this, D only. Uh, then just like list, we use this. For tuple, we use this bracket. Here we use curly brackets. And what is the basic definition of a dictionary? Anyone just speak out. What is the basic definition of our dictionary? So in the same way, we will be entering data in our dictionary in Python. So anyone, what is the basic definition of dictionary? So anyone, just a basic definition of dictionary. Contain information about things. Um, that's also good. But we can say something that is value and the meaning of that value. So there are two elements in a dictionary. Basically our first element and the meaning of that element. So basically we will be adding something as our first element and the value of that element. For example, I'll add my name, Jashan. So list always contain the first element as a string. So Jashan, and then its value column, that BSc student, and then this comma, and you can just do it like this. Then we can say age 19. Make sure to put the comma when you are entering the next value, and you can like go for uni. uh, like yes, he reads in university, so true. I'm just adding different values. Okay, so yeah, then grade or CGPA rather, CGPA 8.6. So we are like here, this is the string value, this is that integer, this is the boolean value, and this is the float value. Okay, so decimal value basically. Now we have defined it, and defined it like this. So if I'll just enter it like D, if I there is one more thing in Jupyter. If I just go and write D, it will be printing the same thing as this function. But this function is recommended, guys. uh, make I used to habit to write a print before printing something, because it's only feature in the Jupyter notebook. Since it's for data analysis, to keep the things fast, they have just removed the thing like print. So you can just skip that part. But yeah, be used to that print stuff, because not every time you will be working with the Jupyter notebook. Maybe you will be shifting to VS Code when you are working with different pipelines. So for pipelines, I means creating something that is journal and used by anyone. Okay, not only you. So that's a pipeline. Okay, so um okay, let me check one thing. So okay, we'll discuss that thing afterward. There is something in my mind. So you can just go it like this. You can just print some values also, कि Jashan की value क्या है. Okay, BSc student. So like this. Also I can try it out if it works like this. So there is nothing called indexing here. Okay,
there is no meaning of indexing in this. You have to just print, search the value like this, like BSc student, and then you have to find out the you have to like ask for the first value and it will be giving the second values, okay, like that. Also you can just add a new thing, or update like that. I'll just show you how. So for example, I'll just okay, entry, okay, then you can just go with another value, like one more element, like uh, interest, interest, और अब इसमें डाल देंगे is equal to, now I'll just put some value here, astronomy, okay, and then if I just go and print out the D value now, it will be adding this value, new element, new data into the D data. Now there is one more feature called update, okay, update, which will be basically another way of adding a value, okay. It's more it's more like making a new dictionary. It's like a tuple, like concatenation in a tuple, concatenation in a dictionary type of thing. So you have to make a small dictionary in it, okay. So like value of like income, then column, then infinite, okay, something like this. So it updated that value and I'll just print it again. So there is income infinity जो भी है, infinite जो भी है, ठीक है. ये चीज़ें होगी, ये are another ways. The basic thing is this will be helping you in future. This won't be helping you in future, but I just taught you guys. But मैंने पहले अभी ऐसे किसी को मतलब किया नहीं है, पढ़ाया नहीं, क्योंकि काम आता नहीं कहीं पे खास ज़्यादा, बट पता होना चाहिए. And then this will be helping you a lot. These things are major things. Slicing is the most important thing you should keep in the mind, and slicing and indexing is the best and the most important thing you have to know about that. So someone is sending my meme in the group, okay. uh, ये हो गया हमारा. इस पर सेम चीज़ है, जैसे हमारे पास लिस्ट है वैसे ही हमारे पास इसके फंक्शन है, डेल फंक्शन. इफ़ यू वांट टू डिलीट सम एलिमेंट, कैसे करना है कि उसकी उसकी वैल्यू डाल देनी है. फॉर एग्जांपल आई वांट टू डिलीट सम income value, and then I'll just go and print the new D value. So it will be just deleting that value. And there is something called pop feature, a very different. So I'll just go it like this. अब इसने करना क्या है, इस पॉप फीचर ने मैं एक वैल्यू नाम का वेरिएबल डिफाइन करूँगा, ओके. सो इट विल बी डी पॉप एंड these brackets age. It will be removing the value of, it will be removing the whole age element with meaning, okay. So if I just print it like this, it also will be giving the value. If I just go with like that, if I just print it like this, so what happened actually, it already deleted the age and I reran the code. So what it's doing is it's not able to find out the element A in the dictionary. If I just go and run this again, okay, now it has the value, it will be giving it like this. Now what it's doing is, if I just go and print the value, अब ये वैल्यू वाली चीज़ क्या है, जो उस पर वैल्यू थी वो तो रिमेंबर करके रख रहा है, बट इसने डिलीट कर दी ऑलरेडी. एंड जो न्यू डिक्शनरी है, इट्स द न्यू डिक्शनरी आफ्टर रिमूविंग द एलिमेंट ए एज, ठीक है. दैट्स ऑल अबाउट द डिक्शनरी गाइज. So we won't be spending much time on this.
हालांकि आज का वैसे आई वांट टू फोकस ऑन मोर ऑन लूप्स एंड फंक्शन एंड सम बेसिक एप्लीकेशन ऑन दैट, बट आई थिंक मेकिंग इट अ सेपरेट थिंग विल बी मोर बेटर बिकॉज इट्स काइंड ऑफ टफ थिंग. सो उसमें हमें थोड़ा सा दिमाग चाहिए करने के लिए. वो थोड़े दैट्स ऑल्सो सम पार्ट वेयर द कोड लुक वेरी डेंजरस. ओके, बस हमने घबराना नहीं है पहले तो. ओके, सो देर इज समथिंग कॉल्ड लूप. ओके, सो लूप लूप्स, और हम अब पढ़ेंगे पहले फोर लूप. देर आर समथिंग टू काइंड ऑफ लूप्स, फोर लूप एंड वाइल लूप. विल बी वर्किंग विद बोथ ऑफ them. So most of the case we use for loop in our analysis. So I will be telling you why. So let's recall our planet list. What I'll do is I'll just write the first three planets here. Maybe adding one more one. Mars, Jupiter, Saturn. Okay. So there are two things, for loop and while loop. The iterations of for loop is fixed and known, बट जो वाइल लूप की इटरेशंस होती हैं, इटरेशन मतलब कि जो वो प्रिंट कर रहा है आगे आगे, वो कंडीशन पे डिपेंड करती है हमारी. ओके, सो लाइक इफ ट्रू और फॉल्स कंडीशन, ठीक है, कंट्रोल बाय फोर ट्रू और फॉल्स कंडीशंस. आई एम टॉकिंग अबाउट द वाइल लूप राइट नाउ. एंड फॉर लूप्स the conditions are range list, it depend upon range and list things. Okay, so for loop are controlled, like we can stop it. It automatically actually stop when the sequence end, but while loop must update some condition ताकि वो स्टॉप हो जाए कहीं कहीं पे जाके. अगर हमने ऐसी कंडीशन नहीं डाली कि वहाँ पे स्टॉप नहीं हो रहा हो, इट विल कंटिन्यू टू इन्फिनिटी. ओके, सो द फोर लूप एक्चुअली एंड नेचुरली. ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती, बट there are some conditions where while loop never ends, so we have to stop out the terminal, we have to restart the kernel, नहीं तो वो रुकेगा नहीं. ठीक है, तो we will be working how for the मैं बताऊंगा कैसे कैसे होता है सारा कुछ. so okay, notes कहाँ गए. so हमारे पास ये लिस्ट है. so I will write for x in planets. X is some unknown variable. X is basically the element to define these planets. So basically for x, x is some element, you can just go with I. For I in planets, planets मतलब जो लिस्ट के एलिमेंट है उसके जो सारे वैल्यूज हैं, हमने क्या करना है, प्रिंट करने हैं सारे एलिमेंट्स. planet then I एंड देन नेक्स्ट लाइन पे जाएगा. स्लैश एंड नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ होता है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था. सो फॉर आई इन प्लैनेट्स प्रिंट प्लैनेट्स आई, और फिर वो नेक्स्ट लाइन में जाएगा. आई का मतलब जितने भी है सारे प्रिंट कर देना एक एक करके. तो ये क्या करेगा, प्लैनेट मरकुरी, प्लैनेट वीनस, प्लैनेट अर्थ, प्लैनेट मार्स, प्लैनेट जुपिटर, प्लैनेट सैटर्न. सो ऐसा ये काम करता है फोर लूप्स. ओके, सो अब एक और चीज़ है रेंज वाला. इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, मतलब यू कैन जस्ट रीवॉच दिस अगेन. अगर आपको ऐसे एक बारी प्रैक्टिस करना होगा ना तो ऐसा रहता है, तो यू कैन जस्ट रीवॉच इट अगेन, बस ऐसा कुछ नहीं है. बट मेन चीज़ ये है कि आपको बस पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है, बिकॉज इन फ्यूचर व्हेन वी विल बी वर्किंग विद सम डेटा, बिकॉज आई विल बी इंट्रोड्यूसिंग सम एस्ट्रोनॉमी डेटा फॉर एनालिसिस. बिकॉज मेरे को नहीं पता कि फिजिक्स का अदर जो जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स हो है, क्वांटम हो जाती है, इसका डेटा कहाँ से लेना है. ठीक है, सो वी डोंट नो, फिर दैट्स व्हाई वी विल बी डूइंग सम एप्लीकेशंस ऑफ एस्ट्रोनॉमी. ठीक है, सो हाउ टू वर्क विद सम एस्ट्रोनॉमिकल डेटा.
सो वी विल बी वर्किंग विद दैट। वो सिमुलेशन वाला पार्ट भी करेंगे, येस ऑफ कोर्स करेंगे, क्योंकि उसके बाद हमने जैसे फंक्शंस और वो पढ़ना है ना, तो हम वी विल बी डूइंग दैट ऑल्सो। उसके बाद मेन जो रहेगा डेटा एनालिसिस वाला स्टफ फॉर नमपाई मैटप्लॉटलिब, वी विल बी डूइंग इट विद द एप्लीकेशन ऑफ एस्ट्रोनॉमी, नॉट अदर कंसेप्ट्स ऑफ फिजिक्स, बिकॉज वो मुझे नहीं पता, ठीक है। जो मुझे पता मैं तुम्हें वही बता पाऊंगा। सो फॉर x in range there is something called range 1 to 10। अब ये क्या कर रहा है इस फंक्शन में कि वो कहता है कि x is some elements in the range these, most of the people use I but I don't look well, क्योंकि मैंने शुरू से x को पढ़ा हुआ है, तो फिर मैं x ही इंट्रोड्यूस करता हूँ, ठीक है। फॉर x इन रेंज 1 to 10, जितने भी एलिमेंट है 1 to 10 वो सारे प्रिंट करेगा, बस 10 से पहले। ऐसा है कि जहाँ पे भी लास्ट एलिमेंट इंट्रोड्यूस होता है ना, वो एलिमेंट ही गिनते नहीं पाइथन के अंदर, ज़्यादातर ऐसा ही रहता है। सो अब अगर मैं करूँगा ना प्रिंट x, सो व्हाट विल बी डूइंग 1 2 3 4 5 6 up to 9, ठीक है। तो 10th वाला नहीं किया, अगर 10th वाला आपने प्रिंट करवाना है तो ये 11 तक जाना पड़ेगा, ठीक है। अगर 0 करना है तो 0 to 10, ओके। सो ऐसा सा केस है। उसके बाद अब चीज़ें आ जाती हैं वाइल लूप, ये होगी हमारी फोर लूप। जब हम एप्लीकेशन करेंगे तो हमें थोड़े से ज़्यादा डिटेल करेंगे। मेन मेरा मोटिव ये है कि अभी आपको बेसिक बेसिक सी चीज़ें बता देना, कि आपको पता हो कि अगर कोई फ्यूचर में हम बड़ा कोड लिखें कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी हैं। बिकॉज जब हम बड़ा कोड लिखेंगे तब हमारा दिमाग चलेगा, तो दिमाग जब चलेगा तब हम कुछ नया क्रिएट कर पाएंगे, ठीक है। तभी हम साथ साथ में सीखेंगे और फीचर्स कौन कौन से होते हैं। सो बेसिकली विदाउट एनी एप्लीकेशन वी कांट लर्न एनीथिंग राइट नाउ, जस्ट वी आर लर्निंग बेसिक्स। और ये हर यूट्यूब चैनल पे पड़ा है ऐसी चीज़ें, ठीक है। बट आफ्टर दैट वी व्हेन वी विल गोइंग टू एप्लीकेशन फ्रॉम नेक्स्ट वीक, है ना, नेक्स्ट वीक भी सेकंड लेक्चर में, तो तब हमारा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा सारा काम, ठीक है। सो वो चीज़ें हैं, सो दैट्स द केस। सो हम क्या करते हैं यहाँ पे वाइल लूप लिखते हैं। पहले फोर लूप की हेडिंग डाल दी थी ना, या फोर लूप, अब होगी वाइल लूप। अब एक कोड रन करूँगा, अगर आप कर रहे हो तो कंट्रोल सी से इसको काटना है, ठीक है। अगर आप उस टर्मिनल पे काम कर रहे हो VS कोड के, अगर आप जुपाइटर पे कर रहे हो तो आपको ये वाला बटन दबाना होगा इसको बंद करने के लिए, ये वाला पोज वाला बटन, या फिर यहाँ से जाके इंटरप्ट करना, ठीक है। तो यू विल बी नाउ लाइक दिस, वाइल ट्रू प्रिंट this will never stop। Actually these are like crazy things to prank someone। ऐसा ना इसका छोटा सा फंक्शन बन जाता है कि अगर आप उस चीज़ को ओपन करोगे ना तो पूरी स्क्रीन पे वही शो होता रहेगा जब तक आप उसको रीस्टार्ट नहीं करते फ़ोन या लैपटॉप को। तो दीज आर सम ऑफ द क्रेजी थिंग यू कैन प्रैंक विद योर फ्रेंड, बट एट योर ओन रिस्क, ओके। सो रेट एक्सीडेड, हाँ वही मुझे एरर दे रहा है मेरे वाला तो, कि नहीं हो पाएगा। सो मतलब मेरे वाला थोड़ा सा अच्छा है, ठीक है, उसने पहली एरर दे दिया, पर वो चल रहा है बैकग्राउंड में, ठीक है। विल टेम्परेली स्टॉप सेंडिंग द आउटपुट, ओके। तो ऐसा ऐसा था, एक मिनट, नहीं ऐसा होना तो नहीं चाहिए था वैसे। हाँ अब ठीक है, वो मेरा वाला कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ऐसी था वो कुछ अलग सा एरर। तो ये देख लो, इट्स जस्ट प्रिंटिंग इन्फिनिटी, ये अभी प्रिंट कर ही जा रहा है जब तक मैं रोकता नहीं ना इसे। सो हाउ टू स्टॉप, गो विद दिस बटन, आई स्टॉप्ड इट। लास्ट में वो एरर दे देगा कि इंटरप्ट वाला कुछ ऐसा ऐसा। सो यार एक्चुअली ना बहुत बड़ा हो गया, हाँ। सो इसमें है कि कीबोर्ड इंटरप्ट, ऐसे तुम इंटरप्ट कर सकते हो। दिस इज़ काइंड ऑफ द थिंग यू शुड नो कि ऐसे वाइल लूप को हमने जब ट्रू गिना दिया तो वो चलती रहेगी, जो भी हमने उसके अंदर प्रिंट किया वो बार बार उसी प्रिंट करता रहेगा। अब इसमें कंडीशंस कैसे लगानी होती है, अब इसमें कंडीशन लगती है, पहले हमें एक कंडीशन देनी पड़ेगी, स्टार्ट करना है हमें 0 से, ठीक है। काउंट इज इक्वल्स टू 0, ये काउंट की जगह हम यार इसको x लिख देते हैं, x इज इक्वल्स टू 0 वाइल x इज लेस देन इक्वल टू
एंड कॉलम प्रिंट एक्स, और एक्स को कैसे प्रिंट करना है, एक एक प्लस करके प्रिंट करना है। तो अब मैं इसको रन करूँगा ना, तो ये क्या होगा कि 0 से स्टार्ट होगा एक्स, एक्स की इनिशियल वैल्यू हमने डिफाइन कर दी 0। अगर मैं इसको यहाँ पे 5 कर देता हूँ ना, तो ये इनिशियल वैल्यू इसकी 5 हो जाएगी। तो इनिशियल वैल्यू है ये, दिस इज़ इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू डिफाइन कर दी, और 10 से पहले जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको मिला के, 10 को मिला के अगर हम ऐसा करते हैं ना, तो 10 ना प्रिंट करता, ठीक है। उसको सारा को प्रिंट करना है, पर प्रिंट कैसे करना है, एक्स में एक एक वैल्यू बढ़ा के। सो ये वाली होगी कंडीशनल वाइल लूप, ठीक है। ये क्या होगी, कंडीशनल वाइल लूप, ओके। सो ये चीज़ होगी, और बस इतना ही मैं बताऊंगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। वो ये कि हम एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे ना एक बारी, तो ज़्यादा समझ आ जाएगा। सो ये चीज़ें होगी हमारी, वाइल लूप वगैरह होगी, ठीक है। हाँ आप एक चीज़ ऐसे भी कर सकते हो, थोड़ा सा फैंसी बनाने के लिए आप प्रिंट वगैरह कुछ भी कर सकते हो, वो हम करेंगे बाद में जब हम गॉसियन प्रोफाइल पढ़ेंगे ना। बेसिकली क्या चीज़ें हैं, जब आएगी ना इसके अंदर मैथ्स, तब सारा कुछ टफ होगा, ठीक है। अभी सारा मतलब ये इजी बीजी चल रहा है स्टफ, तो जब इसके अंदर मैथ्स आएगी तब ये सीधी सी बात है टफ होगा। जब हमने गॉसियन प्रोफाइल फिट करनी है, मोस्ट ऑफ द एमएससी स्टूडेंट्स नो कि गॉसियन प्रोफाइल क्या होती है, वो बेल कर्व होता है, तो उसको फिट करना होता है स्पेक्ट्रम के अंदर, स्पेक्ट्रम के अंदर उसका स्पेक्ट्रम में से कोई, जैसे हम रेड शिफ्ट वगैरह निकालते हैं, डॉपलर इफेक्ट यूज़ करते हैं उसको निकालने के लिए, तो वो उसके लिए यूज़ होती हैं। अदर चीज़ों के लिए भी यूज़ होती है गॉसियन प्रोफाइल, वो तो मैंने विद रिस्पेक्ट टू एस्ट्रोनॉमी आपको मैंने बताया। तो ऐसा चीज़ें और पॉलिनोमियल फिटिंग होती हैं, ठीक है। तो वो वाली चीज़ों में मैथ्स यूज़ होती है, तो वो कोड उतना ही कॉम्प्लेक्स होता रहता है। सो आई विल शो यू आफ्टर एंडिंग द रिकॉर्डिंग कि एक मैं कोड दिखाऊंगा वो कितना कॉम्प्लेक्स है, उसमें पॉलिनोमियल फिटिंग यूज़ हुई है। वो मेरा एक आयुका का एक प्रोजेक्ट था उसके अंदर, ठीक है। सो आई विल जस्ट शो यू दैट, बट राइट नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये हो गया, अब आ गई हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्फ। ये तो ना मैं आपको एक वो भेजता हूँ, actually I have taken the MD course also in पाइथन ऑलरेडी। तो आज ही हमें वो करवाए थे एक दो फंक्शंस, 10 फंक्शंस थे उसमें ऐसे इफ एल्स के, तो दैट विल हेल्प यू आउट इन अंडरस्टैंडिंग हाउ दे वर्क। तो वो थोड़ा सा इजी सा ही है, तो ज़्यादा कोई दिक्कत है नहीं। सो इफ एल्स स्टेटमेंट्स हमें ये पता चलता है, नाम से ही पता चल जाता है कि अगर इफ़ ये होगा तो ये प्रिंट कर दियो, ये कर दियो, अगर नहीं होगा एल्स तो कुछ और कर दियो। अब एलिफ क्या चीज़ है कि इफ़ दिस देन प्रिंट दिस, अगर, एलिफ का मतलब अगर, इफ़ नहीं है पर कुछ और वैल्यू है, एलिफ दिस देन प्रिंट दिस, देन एलिफ दिस देन प्रिंट दिस। अगर एलिफ भी नहीं है इफ़ भी नहीं है, तो एल्स जो भी है उसको प्रिंट कर देना। सो लेट्स क्रिएट अ सिंपल 18 प्लस कंटेंट, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक फंक्शन, एक ऐसा एक प्रोग्राम लिखना है जो बंदे से अपना एज मांगेगा, और अगर वो 18 से ऊपर होता है तो वो उसे पास कर देगा, ठीक है। अगर वो 18 से नीचे है देन इट विल फेल, ओके। सो व्हाट इट विल डू, सो अब इसमें क्या है, अगर एज मांगनी है उससे तो हम क्या यूज़ करेंगे जो हमने कल पढ़ा था, इनपुट आउटपुट। सो व्हाट आई विल डू इज प्रिंट इनपुट एंटर। हाँ, इनपुट के आगे भी एक और चीज़ लगाएंगे कि जो उसने एज एंटर करनी है वो इंटीजर हो, ठीक है। किधर वो वहाँ पे कोई भी वैल्यू भरता और यहाँ पे वैल्यू ना है। इंट एंटर योर एज, ठीक है। इंट हमने डिफाइन कर दिया, बेसिकली जो एंट्री आएगी वो इंटीजर होनी चाहिए, अगर ना हुई तो ऐसी तैसी, मतलब नहीं, ठीक है, नहीं होना चाहिए, एरर देगा वो, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको हम क्या करते हैं, ये एरर देगा यार कोई, रुको कुछ दिक्कत है। अच्छा, इनवैलिड
कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इसको यहाँ पे आना चाहिए था। ठीक है, तो अभी क्या है कि इसको जैसे 10 पुट किया ना, ठीक है, तो इन जो वैल्यू डिफाइन करनी है ना वो इनपुट से पहले करनी है, इनपुट बाद में फंक्शन आएगा। ठीक है, अब इसको फ्लोट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा, बट सो ऐसा है। तो वी विल बी डूइंग लाइक एज इज इक्वल्स टू जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी, तो एज हम अगर प्रिंट करेंगे इसमें बाद में, रुको, ओहो शिफ्ट एंटर नहीं दबाना है, इसमें एंटर दबाना है। प्रिंट, आई एम जस्ट टेस्टिंग समथिंग गाइस, एक सेकेंड। ठीक है, गलती है ना, पहले प्रिंट कर रहा हूँ तो वो कैसे आएगा। ठीक है, तो अब क्या किया हमने, तो एज एज एक वेरिएबल डिफाइन किया जो इनपुट देगा यूज़र। ठीक है, अब उसमें क्या करना है, इफ एल्स स्टेटमेंट लगानी है। तो मैं ऐसे आऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 18, ठीक है, प्रिंट पास, एल्स, अरे इनको ना ऐसे होना है, ये स्ट्रक्चर याद रख लेना यार गाइस प्लीज। एल्स प्रिंट फेल। सो अब क्या है कि यार एक तो ये ना ब्रैकेट नहीं बंद किया ना मैंने प्रॉपर्ली। सो एज दिस टाइप बट एज 10, तो उसने क्या प्रिंट कर दिया, फेल। ठीक है, अगर मैं इसको फिर से रन करके 18 ऐड करता हूँ तो वो पास कर देगा क्योंकि इक्वल टू भी लगाया। ठीक है, ऐसा 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 चीज़ें हैं कि इफ़ अगर एज जो है हमारे पास 18 होगी तो ऐसा होगा। अब एक और चीज़ ऐड कर देते हैं इसके अंदर, एलिफ। ठीक है, एलिफ एज इज इक्वल टू 18, अगर पूरी पूरी है 18 के। ठीक है, अब एक ऐसे कर देते हैं, एक इसको ग्रेटर देन बना दिया ना, अब इसको पूरी पूरी 18 के इक्वल वाला भी एक फंक्शन बना देते हैं कि बेयरली पास्ड। ठीक है, ऐसा प्रिंट करें, तो अब मैं 18 प्रिंट करूँगा ना, तो वो क्या करेगा, बेयरली पास। तो ऐसा है कि इफ़ 18 से ऊपर होगा तो पास ही है। अगर 18 एलिफ मतलब एक और कंडीशन जो इफ़ जैसी ही है, कुछ प्रिंट कर रही है कुछ कंडीशन के अंदर, बट वो इफ़ से अलग है, सो एलिफ। ठीक है, मतलब एल्स और इफ़ को मिला के, कि इफ़ भी नहीं है बट इफ़ जैसी कुछ और कंडीशन है, तो एल इफ़, एल्स इफ़। तो एल्स इफ़ 18 के अगर बिल्कुल बराबर बराबर है, देन ओके, सो तो वो प्रिंट करेगा जो भी है। अगर कुछ भी नहीं है तो एलिफ, इफ़ भी नहीं है एलिफ भी नहीं है, तो वो प्रिंट करेगा फेल। ओके, सो दैट्स इट, ये हो गया। इसके बाद हाँ, इसमें ये भी हो सकता है, ट्रू भी कर सकते हैं ऐसे, मतलब कुछ भी कर सकते हैं यार, जैसे 18 है ना, मतलब यार एक पाइथन एक लैंग्वेज है जिससे तुम कुछ भी कर सकते हो, सीधी सी बात है, वो आप पे क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है। अब तो मैंने ट्रू वैल्यू डाल दी, ट्रू भी आएगा, ट्रू और फॉल्स कुछ भी आ सकता है। ठीक है, तो ऐसा है, अगर मैंने फेल की जगह इसमें फॉल्स डाल दिया और यहाँ पे 1 लिख दी, फॉल्स आ जाएगा कि नहीं यार, फॉल्स भी मतलब एक वो इशारा है कि नहीं। ठीक है, दिस इज़ ऑल अबाउट इफ एल्स स्टेटमेंट। अब मैं इसकी तुम्हें एक 10 भेज ही देता हूँ, 10 के एग्जाम्पल है, तुम देख लेना अलग अलग, तो वो तुम, मैं आपको भेज देता हूँ अभी। और आई अपडेट दैट ऑल्सो, एक मिनट, MD कोर्स, बाकी तो मैंने तुम्हें करा दिया, बस ये तुम देख कर ही देख लेना। ओके, तो हमारा ग्रुप कहाँ है, आई हैव जस्ट सेंडिंग यू सम दीज थिंग्स। तो इसमें क्या है कि
ये अलग अलग फंक्शन है, जैसे बेसिक कैलकुलेटर कैसे बनाना है हमने वो पढ़ लिया था, ऑपरेटर्स पढ़ लिए थे। तो ऐसा है कि ऑपरेशन अगर हमारे पास प्लस लगा हुआ है, व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि ट्राई इट योरसेल्फ। बेसिकली जो सीधी सी बात है, ये सारे इजी हैं, सारे इफ एल्स लग रहे हैं, ठीक है। बीच में कहीं वाइल लूप भी आ जाता है, तो एक बार कर लेना, एक प्रैक्टिस हो जाएगी। ज़्यादा ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अगर कुछ डाउट भी आता है यू कैन आस्क, सिंपल सिंपल से है, मतलब मजाक किया हुआ है अगर आपको थोड़ी बेसिक आती है ऑलरेडी, ठीक है। तो बस एक बारी ट्राई मार लेना इफ़ यू आर न्यू, तो वो सही रहेगा तुम्हारे लिए, ठीक है। या ऐसा ऐसा है, ठीक है। तो ये मैंने तुम्हें बेसिक बता दिया। अब इसमें ना एक एग्जांपल है, इसमें एक है फोर्थ प्रोग्राम जो कहता है सम ऑफ नंबर्स निकालना यूजिंग वाइल लूप। तो इसमें क्या किया है कि इट्स नॉट बेस्ड अपॉन इफ एल, इसमें क्या है कि वाइल लूप भी यूज़ किया हुआ है, इसमें वो नहीं यूज़ किया है इफ एल। ये फोर लूप की एक एग्जांपल है, एक वाइल लूप की एग्जांपल है। तो वाइल उसने क्या किया, अगर आई लेस देन एन है, एन इज़ बेसिकली द नंबर ही इज़ एंटरिंग, ही इज़ आस्किंग, देन द सम ऑफ द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो, क्योंकि अगर हम पहले कुछ डाल देंगे, ऐसे अगर वन डाल देते हैं, जो रिजल्ट आएगा उसमें वो वन और प्लस कर देगा। तो इनिशियल सम उसका डाल देते हैं ज़ीरो, मतलब एंट्री हमने ज़ीरो कर दी कि अभी कोई सम नहीं आया। एंड आई इज़ समथिंग वन, ठीक है। अब आई इज़ लेस देन एन, अगर वन से वो ग्रेटर देन वन होगा, तो क्या करना उसने, सबको प्लस कर देना है, और आई के साथ आई की जितनी भी वैल्यूज़ होंगी उसको सारे को प्लस करके उसका आंसर दे देना है। तो क्या है कर रहा है ये, बेसिकली सम की जो वैल्यूज, सम का जो आंसर होगा वो बेसिकली सबका प्लस होगा आई की वैल्यूज़ का, और आई क्या है, एक एक नंबर बढ़ाई जो उसके अंदर, ठीक है। ऐसा है। सो ये एक बारी कर लेना, ज़्यादा नहीं है मतलब डिफ़िकल्ट। आई वॉन्ट बी फोकसिंग ऑन दीज स्टफ्स बिकॉज ये नहीं है यार टफ, ठीक है। तो एक बार आप करोगे तो पता लग जाएगा, ठीक है। सो बेसिक बेसिक सा मैंने आपको बता दिया। अब आ जाता है फंक्शन, ठीक है। फंक्शंस अब आज बस हम इतना ही करेंगे, फंक्शंस मैं बेसिक करवाऊंगा, मतलब एक दो एग्जांपल्स दूंगा कि रेड शिफ्ट फंक्शन क्या हो गया, जैसे हम छोटे छोटे फंक्शंस बना लेते हैं कुछ भी। अगली बार थोड़ा सा टफ होने वाला है सेशन, ये तो हमने बेसिक बेसिक कर लिया। आई वांट कि जो मैंने तुम्हें भेजा कि वो एक बारी गो थ्रू होके आए, और जो ये चीज़ें सारी एक बारी गो थ्रू होके आए, ताकि जो अगला सेशन होगा, क्योंकि अगले सेक्शन में थोड़े सा हम इनिट वगैरह यूज़ करेंगे, वो वाला ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्लास वगैरह, तो उसमें थोड़ी सी दिक्कत ना आए तुम्हें। सो यू हैव टू डिवाइस दिस ऑल स्टफ। अब आ जाता है फंक्शन, और क्योंकि क्लास और वो चीज़ें हैं ना जो अगले सेशन वाली, और जो ये फंक्शन है, फंक्शन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन द डेटा एनालिसिस, एंड द क्लास एंड ओप्स थिंग्स आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट इफ़ यू आर क्रिएटिंग if you are dedicatedly working in the field of computational physics या computational astrophysics। तो उसमें आपको पाइपलाइंस वगैरह बनानी होती हैं, तो वो बहुत मतलब झंझट सा होता है उसका, तो आपको वो आनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसा 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 है। तो फंक्शंस में क्या है हमारे पास, फंक्शंस ऑलवेज स्टार्ट विद डेफ। हम एक डेफ वर्ड लिखते हैं आगे, और उसके बाद एक फंक्शन का नाम लिखते हैं। सो फॉर एग्जांपल वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन विच ऐड टू वैल्यूज़, टू और थ्री वैल्यूज़। तो नहीं, अभी हम टू से वैल्यू काम करते हैं। तो टू वैल्यूज़ ऐड करेगा, उसके बाद हम कॉलम डालेंगे, उसके बाद तो हम क्या करेंगे कि x जो है हमारे पास वो आएगा रिजल्ट, x विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी। तो रिटर्न एक चीज़ होती है हमारे पास, रिटर्न एक्स। इसमें दो चीज़ें होती हैं फंक्शन में, एक होती है डेफ और उसका नाम, फंक्शन का नाम, एंड फंक्शन के अंदर की वैल्यूज़ ए एंड बी। सो ए एंड बी आर द पैरामीटर्स जो उसको फंक्शन को चाहिए रन होने के लिए। अगर वो चीज़ें नहीं होंगी सो इट वॉन्ट बी रनिंग, ओके। सो बेसिकली इट इज़ आ summation function which require at least two entries, ओके। और अब क्या करूँगा मैं, इसको रन कर दिया, नॉर्मली रन हो जाएगा क्योंकि अभी कोई एंट्री नहीं डाली इसके अंदर। अब मैं क्या करूँगा, ए को करूँगा 0, बी को कर दूँगा 10। तो हमें पता है कि जो ए प्लस बी होगा हमारे पास 10 वैल्यू आएगी। तो अब मैं क्या करूँगा, ऐड फंक्शन को कॉल करूँगा, ठीक है, और ए एंड बी उसके अंदर डाल दूँगा, तो क्या हो जाएगा, 10 वैल्यू आ जाएगी। अब मैं इसके अंदर 10 डाल देता हूँ तो 20 आ जाएगी। तो बेसिकली ये ऐड चीज़ क्या कर रही है
इट्स कॉलिंग अ न्यू वैल्यू जो जो इस बेसिस पे काम करेगी, ठीक है, ऐसा है। अब एक और फंक्शन बना लेते हैं छोटा सा। इतना समझ आ रहा है किसी को यार? ऐसा तो नहीं यार मैंने ज़्यादा वो कर दिया कि भाई 7 ही बच्चे रह गए। कंटेंट अच्छा, कोई डाउट है तो बता दो। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ टेल मी। अभी तक कोई दिक्कत आ रही है या नहीं? क्योंकि आज का लेक्चर आई नो इट्स अ बिट कंफ्यूजिंग दैन द प्रीवियस वन, ठीक है, जो सीधी सी बात है। ऐसे ही होगा आगे आगे, मतलब थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता जाएगा। सो एनी डाउट्स टिल नाउ, येस और नो इन द कमेंट सेक्शन गाइस प्लीज। नो डाउट्स। ये मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये जो जनता है पहले पढ़ के आई हुई है, मतलब थोड़ा थोड़ा, तभी ऐसे, नहीं तो आ जाते हैं डाउट्स। तो ओके, सो ऐसा हम इसमें क्या कर सकते हैं, और सी डी भी डाल सकते हैं। तो इसमें क्या कर देंगे कि प्लस सी प्लस डी, ऐसे यहाँ पे कोई भी ऑपरेटर यूज़ कर सकते हैं, कोई भी अजीब सा फंक्शन बना दोगे आप, तो ऐसा है। अब अगर मैं ऐसे करता हूँ तो अब इसमें क्या है कि इसको ये ज़रूरत नहीं है कि अब इसमें एरर फेंकेगा, क्योंकि 2 रिक्वायर्ड पोजिशनल एलिमेंट सी और डी मिसिंग है इसके अंदर। तो अगर मैं सी इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू 10 कर देता हूँ तो फिर काम नहीं करेगा। नहीं, रुको रुको, वहाँ पे नहीं डाली ना वैल्यू। तो इसमें मैंने क्या किया, सी इजकल टू डी इजकल टू दिस, तो ऐसा इसको ऐसे भी कर सकता हूँ। सो दैट्स ऑल्सो वर्क, ओके। सो ऐसी चीज़ें हैं, इसको आप कुछ भी क्रिएटिव कर सकते हो, और हम बहुत इसको गंदे वाला क्रिएटिव करेंगे इन फ्यूचर, ओके। दैट रिक्वायर 4 एंट्रीज, बहुत गंदे वाला होगा ये, क्योंकि जब फंक्शन बनेगा ना गॉसियन प्रोफाइल के लिए, तो हम क्या करेंगे, पहले एक फार्मूला क्रिएट करेंगे गॉसियन का स्टैंडर्ड फार्मूला, जिसके अंदर वो कॉन्टिन्यूम्स एम्पलीट्यूड वगैरह वो सारा कुछ डालेगा, और एक गैसिंग फीचर डालेगा, वो करना है हमने सारा कुछ। तो वो बहुत 20-30 लाइनों का कोड बन जाना है सिर्फ फंक्शन का एक। सो वी विल बी डूइंग दैट, सो यू नीड पेशेंस फॉर दैट बिकॉज क्रेजी थिंग्स विल बी कमिंग। सो एक हम क्रिएट करते हैं फंक्शन जो हमें ग्रीट करे। अब ये छोटे छोटे से चीज़ें हैं। नेम इज इक्वल्स टू स्ट्रिंग, स्ट्रिंग मांगेगा इनपुट, इनपुट के स्टाइल के अंदर, तो व्हाट इज़ योर नेम, ठीक है। और ऐसा अगली लाइन में इसको फिलिंग द ब्लैंक दे देंगे। तो अब एक क्रिएट करेंगे ग्रीट नाम का फंक्शन, जो क्या करेगा, जो कॉल करेगा नेम को, नेम एंट्री उसको रिक्वायर होगी, तो क्या करेगा, प्रिंट करेगा वो, जब उसके पास नेम आएगा हेलो, उसके बाद नेम, उसका नेम जो भी उसने एंट्री डाली, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कर देना है, इसको बार कर देना है ग्रीट नेम, क्योंकि ये उसके बाद हो गया ना, ये तो हमारा फंक्शन बन गया। एक मिनट यहाँ पे लिख देता हूँ, फंक्शन स्टार्ट, ठीक है। एंड्स, ठीक है, बस इतना सा फंक्शन है। उसके बाद हमने कॉल किया उस फंक्शन को बाद में। अब ये क्या कर रहा है, जशनप्रीत, तो ये क्या करेगा, हेलो जशनप्रीत। सो बस ऐसा ऐसा ऐसा। सो ये चीज़ें हैं। अब फॉर नाउ आई गेस इतना काफ़ी है आज के लिए। अभी एक चीज़ और चीज़ है जो हम अगले सेशन में ही करेंगे, एप्लीकेशंस ऑफ फिज़िक्स वाया फंक्शंस। तो हम क्या करेंगे कि हम कुछ कुछ फार्मूलाज उठा लेंगे फिज़िक्स के, उन्हें अप्लाई करके देखेंगे कि हाउ टू यूज़ दैट एंड मेक अ फंक्शन, कि कोई भी हम सिर्फ वैल्यू डालें रादर डूइंग अ होल कैलकुलेशन। जैसे हमारे पास वेव एंड ऑसिलेशन का इक्वेशन है, उसका फंक्शन बना देना, रेड शिफ्ट का फंक्शन बना देना, न्यूटन एलएनएम का बना देना फंक्शंस। तो ऐसे ऐसे फंक्शंस बनाएंगे, और उन फंक्शंस को हम सिर्फ वैल्यूज़ देंगे एंड इट विल बी गिविंग डायरेक्ट आंसर्स, ठीक है। तो ऐसा ऐसा फंक्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो वो हो जाती है थोड़ी सी मैथ्स एंड पाइथन मिक्स, ठीक है। वो बेसिक बेसिक चीज़ होगी। उसके बाद देन वी विल डू क्लास एंड वो वाली पाइपलाइन वगैरह हम सीखेंगे। देन आफ्टर ये सारा कुछ हो जाएगा, देन वी विल बी गोइंग टू दी डेटा एनालिसिस स्टफ। अभी क्या कर रहे हैं हम, डेटा एनालिसिस बिल्कुल नहीं कर रहे,
we are just learning the basic preliminary things that we want for data analysis. Okay, so by this I will end up the session today, और अब मैं recording बंद कर देता हूँ.